हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज का जो आपका लेक्चर है दैट इज इन कंटिन्यूशन। वी हैव डिस्कस्ड 20 क्वेश्चंस which were asked in your CLAT UG 2023 and today we will discuss the further questions. As you all know, there were 40 questions asked this time in the CLAT exam paper from the section of legal reasoning, right? So let us start with our first question for today. This is from NALSA. Let us see what it says. Free legal aid is the provision of free legal services in civil and criminal matters. ठीक है, as I suggested, always and always you were supposed to mark the keywords. ठीक है, अब इस एग्जाम में जो करके आए हो, ठीक है, अगले एग्जाम के लिए आपकी टिप है, ये ट्रिक है, जो मर्जी समझ लो. You have to mark the keywords which are given in your passage. Clear? तो पहला कीवर्ड यहाँ पे क्या है? Civil and criminal matters. For those poor and marginalized people who cannot afford the services of a lawyer for the conduct of a case or a legal proceeding in any court, tribunal or authority. ठीक है जी, these services are governed by the Legal Service Authority Act 1987, the act and provided by the National Legal Services Authority. Clear? Which is known as NALSA. So what are the provisions for free legal aid? It includes representation by an advocate in legal proceedings, payment of process fees, expenses of witnesses and all other charges payable or incurred in connection with any legal proceedings in appropriate cases, preparation of pleadings, memo of appeal, paper book including printing and translation of documents in legal proceedings, drafting of legal documents, special leave petition, etc. Supply of certified copies of judgments, orders, notes of evidence and other documents in the legal proceedings. आगे कह रहे हैं free legal aid also include provision of aid and advice to the beneficiaries to assess benefits under the welfare statutes and schemes framed by the central government or the state government and ensure access to justice in any other manner. Free legal aid is not confined to cases before the subordinate courts. Free legal aid must be provided to the needy from lowest court to the Supreme Court. ठीक है जी. So, according to Section 13, Clause 1 of the Act, any individual who satisfies any criteria under the Section 12 is entitled to receive free legal aid provided that NALSA is satisfied that such person has genuine case to prosecute or defend the matter. There is hence no bar to which kind of cases one can apply and not apply for. So, there is a no bar to which kind of cases one can apply and one can't apply for. Section 12 of the Act includes of the following. So, Section 12 में कौन-कौन सी provisions हैं? देख लीजिए. A member of the scheduled caste or scheduled tribe, a woman or a child, a person with disability, an industrial workman, a person in police custody. Clear? So, this was extracted from where? It was extracted with edits and revisions from frequently asked questions, National Legal Services Authority. So, this passage was extracted from there. Clear? So, let us see the first question. Divya was arrested by the police and charged with having committed a murder. She was convicted by the trial court and appealed to the High Court. She lost her appeal there and decided to appeal to the Supreme Court. By this time, she has run out of money. So, she approaches NALSA and asks them to help her to get an advocate who can represent her before the Supreme Court. ठीक है जी? Is Divya entitled to support from NALSA? First of all, she is a woman. First thing is this ना. ठीक है, वहां पर जो हमने Section 12 पढ़ा है, वहां पे खास लिखा हुआ है कि it can be provided to women and children. Clear? So let us see. So first thing तो आपकी यही है जो आपके passage में clear दी हुई है. So she can easily get the support. So answer will be yes. Let us see. No, since she should have approached the matter beginning of the case before the trial court and not such a later stage. ये कह रहे हैं कि late stage पे ये नहीं जा सकती, इसको पहले ही जाना था. ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पैसेज में लिखा हुआ है one can approach the court at any stage, being it the trial court, high court, supreme court. They can take the help of NALSA at any stage of the trial. Clear? So this option is not appropriate. Yes, since her previous lawyers were incompetent and that is why she lost the matter in the trial court. See, incompetent thing, again, this is a layman language and we are not supposed to pick the layman language options over here. See, so that is why this option is also inappropriate and incorrect. अगला कह रहे हैं, yes, she is entitled to free legal aid in the Supreme Court proceedings because she is a woman. Absolutely, this is the right option. No, since she had been accused of having committed a heinous crime. देखो ऐसा कुछ भी नहीं है.
यहाँ क्राइम की कहीं पे भी बात नहीं मेंशन करी हुई थी. They have given, देखो अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग यू सो मेनी थिंग्स फ्रॉम लास्ट फ्यू लेक्चर्स इटसेल्फ कि आपके पैसेज में ही कीवर्ड्स होते हैं. यू नो आप यूजी के लिए एग्जाम देने जा रहे हो, उनको भी पता है आप कितने पानी में हो कितने के नहीं हो, ठीक है ना. सो यू जस्ट हैव टू पिक दोज कीवर्ड्स फ्रॉम देयर एंड आंसर इज यू नो सीधा साफ वहां पे लिखा होता है. एंड यू हैव टू जस्ट use your IQ, use your brain, and you have to use your legal reasoning, and you have to pick the correct answer. So this question was very easy here. Here C will be the right answer. Yeah. Let us see the next question. Divya is acquitted by the Supreme Court. अब देखो जी Supreme Court ने दिव्या को acquit कर दिया है and goes back to her regular life. Some days later she has a fight with her neighbor Priya over a petty matter and decides to file a criminal case against her. She approaches Nalsa for free legal aid to prosecute the matter. She tells Nalsa representative that she knows she does not have a genuine case, but she just wants to harass Riya. यहाँ harass करने के लिए ही जो है वो मतलब कि डालना चाहती है. फिर वो कह रहे हैं Nalsa refuses to provide Divya free legal aid because they believe she does not have a genuine case to prosecute. Can Nalsa do so? तो ऑप्शन ए देखो yes, since section 13 clause 1 of the act provides that free legal aid can be provided if Nalsa is satisfied the person has genuine case to prosecute and they did not believe that Divya had the genuine case. देखो जब हमने पैसेज करा था, where is the passage? See, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है who satisfy any criteria under section 12. फिर यहाँ पे लिखा भी हुआ है that Nalsa is satisfied that such person has a genuine case to prosecute. Clear? So again this hint has been already given in your passage. Clear? So again very easy question. So जिसका सीधा सीधा आंसर दिख ही रहा है जो कि है आपका यही वाला section 13 clause 1. Yes, is Divya had already, ये कोई बात नहीं बनती कि उससे पहले ली थी अब दोबारा लेगी. No, that things are immaterial again. Okay? So this is not the correct option. Yes, since Divya had already applied for free legal aid from Nalsa in the past and she could repeatedly can ask for Nalsa, but the thing is she should have a genuine case against, you know, to file. She should have the genuinity of the case. जब वो ही नहीं है, then how Nalsa can, you know, give her the free legal aid? So this is also not the right option. No, since Divya is a woman and is included. देखो women is included. But again, genuinity of the case is very much required. So only here option A is correct. Rest all are incorrect. Yes, option A is right. आगे चलते हैं जी. Incensed that Divya, Riya decides to file a civil case against Divya, claiming that Divya had violated the terms of the contract they had made some time back. Divya approaches Nalsa now for free legal aid to defend the matter, which Nalsa agrees to provide. Since Riya is also short of funds, she also approaches Nalsa for free legal aid. Nalsa refuses to provide legal aid to Riya since they are already providing Divya free legal aid in the same case. Is Nalsa right in refusing free legal aid to Riya? Now, we have to decide कि Nalsa has the right कि वो एक को दे रहे हैं दूसरे को नहीं दे सकते. तो सीधी सी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, so here answer will be no because here Nalsa is not right. Okay. So let us see the option. Yes, since Nalsa cannot provide free legal aid to opposing party. ऐसे ये वाला opposing parties वाला कहीं पे भी आपके passage में mention ही नहीं है. Clear? So ये option है ही नहीं आपका. Yes, since Nalsa does not provide free legal aid. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लिखा हुआ था be it any matter civil or criminal, Nalsa can provide the free legal aid. Clear? Next point is no, since Divya had filed a frivolous case against Riya in the past and Riya was entitled to retaliate by filing another case against Divya. ऐसा कुछ भी नहीं है कि you know past things are immaterial to the present things in the case. Clear? Next option, no, since Riya is a woman and is entitled to free legal aid as long as Nalsa is satisfied she has a genuine case. Exactly, this is the right. ये नहीं होता कि Nalsa के पास एक ही lawyer होता है. They have you know bench of lawyers 5, 6, 10 depending upon the demand of the district. Clear? So ये नहीं कि जो दिव्या को मिला वो ही रिया को मिल जाएगा. They have been you know bunch of lawyers or advocates over there and anyone can represent Riya and anyone can represent Divya. Clear? Matter is solved now. So here D will be the right answer. Let us see the next question. Farhan is an up and coming artist and makes a living selling his paintings.
Since he is not very well known, he is not able to sell too many paintings and is dependent on aid from the government and well-wishers. He reads about new central government scheme in the papers one day, under which artists would provide a monthly stipend by the local governments. Since he finds the language of the scheme document very complex to understand, he approaches NALSA for help in understanding the scheme and obtaining the stipend. Is he entitled to free legal aid from NALSA in this regard? So you have to find it. Is he? देखो यहाँ जो हमने पैसेज पढ़ा वहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था कि वो पढ़ने के लिए लीगल लैंग्वेज के लिए वी कैन अप्रोच नालसा. वी कैन ओनली अप्रोच नालसा व्हेन देयर इज सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, राइट. एंड अदर थिंग इज जो हमने सेक्शन 12 पढ़ा था उसकी कुछ कैटेगरीज थी, ये उसमें भी फॉल नहीं कर रहा है ना. सो लेट अस सी द ऑप्शंस. नो, सिंस फ्री लीगल एड डज नॉट इंक्लूड प्रोविजन टू हेल्प एंड अंडरस्टैंड एसेस बेनिफिट्स अंडर द government schemes. No, since he does not fit with any of the categories mentioned in 12 of the Act. Yes, since free legal aid includes provision to help and understand the assess benefits under government schemes. Yes, since he is struggling artist. ये तो बिल्कुल गलत है जी. देखो ये फरहान जो है कहीं पे भी जो हमने सेक्शन 12 देखा उसमें जो इसकी कैटेगरी है फिट नहीं करती है, ठीक है जी, जिस वजह से जो है इसको नालसा से बेनिफिट नहीं मिल सकता है. B will be your right answer. Exactly. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. विक्रम is a rich businessman and has a huge art collection. Farhan invites Vikram to his studio one day, hoping to convince Vikram to buy some of his paintings. Vikram does not buy any of his paintings, but after he leaves, Farhan notices that one of the newest paintings is missing. He suspects that Vikram had stolen it and complains to the police, who promptly arrest Vikram. Vikram now approaches NALSA for free legal aid so that he can obtain the bail. Now we have to check, is Vikram entitled for the free legal aid from NALSA or not? क्यों बताओ. देखो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आपका टफ है इस पैसेज का. क्यों टफ है? यहाँ पे देखो कह रहे हैं विक्रम ने कंप्लेंट करी. नहीं, फरहान ने कंप्लेंट करी, विक्रम ने स्टोल करी है. So Vikram is already under arrest now. So he is under the police custody and ये आपका सेक्शन 12 का क्राइटेरिया जो है फिल करता है जी. ठीक है. यहाँ पे जानबूझ के रिच बिजनेसमैन लिखा है सो दैट आप कंफ्यूज हो, जबकि इसके पैसेज में दे रखा है कि विक्रम इज ऑलरेडी अरेस्टेड. क्लियर? सो नो, सिंस ही इज अ रिच बिजनेसमैन एंड कैन हायर लॉयर विद इन हिज ओन मनी. ये दो बच्चे टिक करके आए होंगे जिन्होंने पैसेज अच्छे से देखा. क्लियर? तो ये ऑप्शन गलत है. यस, सिंस ही वाज इनोसेंट, ये भी नहीं है. इनोसेंस का देखो यहाँ पे नालसा का है तो हमें उस अकॉर्डिंग का जो आंसर है वो पिक करना है. ठीक है. तो कह रहे हैं यस, सिंस ही वाज इन पुलिस कस्टडी, एब्सोल्युटली दिस इज योर राइट आंसर. क्लियर? अंडर सेक्शन 12 ऑफ नालसा. सो सिंस ही हैज स्टोलन, देखो ये भी नहीं है, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है, नहीं है, दैट इज इमटेरियल फॉर लॉ, लीगल लैंग्वेज, लीगल थिंग्स. सो ओनली हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्लियर? लेट अस सी द आंसर. या सी इज योर राइट आंसर. क्लियर? हम चलते हैं जी नेक्स्ट पैसेज पे. हाँ जी, सरोगेसी पे जी है ये आपका पैसेज. सरोगेसी इज डिफाइंड बाय लॉ एज अ प्रैक्टिस वेयरबाय वन वुमन bears and gives birth to a child for intending couple and intends to hand over the child to them after the birth as per Surrogacy Regulation Act 2021. इसका देखो शॉर्ट इन्होंने एसआरए करके लिखा है, तो हमने एसआरए यहाँ पे भी आएगा, दैट इज सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट. क्लियर? नाउ द एसआरए restricts altruistic surrogacy to legally wedded infertile Indian couples. So the couple is deemed eligible for surrogacy only if they have been married for 5 years. The SRA sets an age limitation for the couple. So see, again there is an age limit. Eligible only if they have been married for 5 years. Again the keywords you have to mention. Questions यहीं से पूछ लिए जाते हैं. Now, a husband must be between 26 and 55 and wife should be between 23 and 50. This is the limitation. Further, Indian couples with biological or adopted children are prohibited from undertaking surrogacy, say for some exceptions such as mentally or physically challenged children or those suffering from a life-threatening disorder or fatal illness. Again, this is an important line. Now let us see. The SRA provides that the surrogate mother has to be close relative of the couple, a sibling of one of the members of the couple. A married woman with a child of her own age between 25 and 30 years who have been surrogate only once in her life. Even within this category of people, commercial surrogacy is banned in India, and that includes the commercialization
of surrogacy services or procedures or its component services or component procedures. The surrogate woman cannot be given payment, rewards, benefits or fees except the medical expenses and such other prescribed expenses incurred on the surrogate mother and insurance coverage for the surrogate mother. आगे, हाँ जी. A legal commentator points out some criticism of the law permitting illimited conditional surrogacy to a married Indian couple and disqualifying other persons on basis of nationality, marital status, sexual orientation, or it does not pass the test of equality. He writes, he adds that reproductive autonomy inclusive of the right to procreation and parenthood is protected under Article 21 of the Constitution of India. So Article 21 Constitution की यहाँ पे बात कर रखी है क्योंकि इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, उसके बाद फ्रीडम्स की भी बात हो गई, which guarantees the right to life and personal liberty. The intending parents typically sign a contract with the surrogate. The Indian Contract Act. देखो यहाँ पे 3 एक्ट्स आपके डाल रखे हैं. अब आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की भी यहाँ पे बात आ गई है. Provided the valid contract has to be in writing and signed in the presence of 2 witnesses. Again, this is to be remembered, 2 witnesses. The IC also provides that a contract that is prohibited by any other law will not be valid under ICA. ठीक है जी, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट करा है? इंडियन एक्सप्रेस से करा है. What laws regulate surrogacy in India? चलो जी, ये आपका पैसेज था. देखो पिछला पैसेज तो was very easy, comparatively very easy, right? So उसका बस लास्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था. क्लियर? अब ये पैसेज है, इसमें लेयर्स हैं and you have to understand that layers. That surrogacy act now is linked with constitution and then they have said that there is no equality and then the contract banana है should be under the provisions of Indian Contract Act. ठीक है? So it has been linked with 2 other acts. Now you have to understand the layers. और उसके अलावा जो surrogacy की जो provisions हैं, conditions हैं, उनके बारे में अलग से बताया हुआ है. So this is in whole your this passage, big passage. ठीक है? चलो. Let us see the first question. Rani and Shiva would like to opt for surrogacy. They have been married for 5 years. अब देखिए, married है 6 years के लिए, criteria is fit because 5 years चाहिए. अब रानी की एज देखो यहाँ बता रहे हैं 51, जबकि चाहिए कितनी? 50 तक चाहिए. और शिवा की 53 बता रहे हैं. ये गड़बड़ आ गई है यहाँ पे. Both Rani and Shiva have built successful business empires. They are now working together on a joint initiative due to demanding nature of the work. They have not thought about children previously. However, they are now very keen to have a child via surrogacy. So, हमने भी यहाँ पे क्या देखना है? हमने देखना है कि क्या surrogacy वो ले सकते हैं कि नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको कीवर्ड्स तभी मेंशन कराए थे. जस्ट यहाँ मैथ्स लगेगा. आपका 51 है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये फॉल ही नहीं कर रही है रानी. ठीक है, सो नाउ दे कांट हैव अ चाइल्ड विया surrogacy. So are Rani and Shiva eligible for surrogacy under SRA? Yes, because they have been married for more than 5 years. ये बात तो ठीक है, but 51 बात ठीक नहीं है. That is why this option is wrong. Yes, because they have financial capacity. Again, financial capacity has nothing to do except for some medical expenses, insurances and all that. So this option is also wrong. No, because they do not fall within the legal requirements of the intending parents. Exactly, this is your right option. No, because they are not in again this thing will not apply because again legal आपका requirement fulfill नहीं हो रही है. साफ साफ एज फैक्टर दिख रहा है जो कि गलत है, वो फॉल ही नहीं कर रहा क्राइटेरिया में. सो हियर सी विल बी योर राइट आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन. सी इज योर राइट. देखो वैसे मैं देखती आ रही हूँ, ये मेरा 3rd लेक्चर है. काफी इजी पेपर था आपका लीगल रीजनिंग, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के. चलो ठीक है, जो है आपका इलेक्टोरल वाला ले लो, वो भी थोड़ा टफ था. ट्विटर वाला भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था. अदरवाइज जो आपका क्रुएलिटी पे आया था वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, फिर उसके बाद आपका उस पे आ गया था क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट में, वो भी इजी था. भार्गेश वाला वो भी इतना टफ नहीं था. ठीक है, अब ये जो हमने लास्ट करा वो तो बहुत ही इजी था और अब मुझे ये भी थोड़ा मतलब इजी लग रहा है. ठीक है, चलो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Assume Rani and Shiva are eligible for surrogacy under the SRA. ठीक है जी. They approached Geeta to act as a surrogate. Geeta is Rani's sister. ये भी ठीक है जी. She is 29 years old. ठीक है जी. She is married, has 1 child and has been surrogate. Oh, now here the thing is this. She has been surrogate twice before. और आपके ऑप्शन में ये बात साफ साफ लिखी हुई थी. क्या लिखी हुई थी? कि वहां पे पढ़ ही लेते हैं. या शी शुड नॉट बी
यहाँ पे लिखा हुआ है हु 25 और 35 ईयर्स तो यहाँ पे लिखी हुई है हु हैज बीन अ सरोगेट ओनली वंस इन हर लाइफ। इवन विद इन दिस कैटेगरी ऑफ पीपल, ये कमर्शियल, तो यहाँ पे ओनली वंस इन हर लाइफ है। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है? ओनली वंस इन हर लाइफ एंड शी हैज बीन ट्वाइस। यही क्वेश्चन है ना आपका? हाँ जी, एंड शी हैज बीन ट्वाइस। चलो जी देखते हैं, गीता इज एलिजिबल टू बी अ सरोगेट बिकॉज शी इज अ क्लोज रिलेटिव। देखो ये बात तो ठीक है कि एलिजिबल है, बट शी हैज बीन ट्वाइस, सो दैट इज व्हाई ये ऑप्शन स्टक। गीता इज एलिजिबल टू बी अ सरोगेट बिकॉज शी इज मैरिड, अगेन दिस पॉइंट इज रॉन्ग। सो क्योंकि मैरिड अनमैरिड का कोई चक्कर नहीं है वहां पे। अगला, गीता हैज बीन सरोगेट ओनली ट्वाइस बिफोर एंड नाउ इज एलिजिबल टू बी सरोगेट फॉर रानी। ये भी पॉइंट आपका ठीक नहीं है। आगे, गीता इज एलिजिबल टू बी सरोगेट बिकॉज शी इज 29। सो हमने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, हमने फॉल्स स्टेटमेंट देखनी। मैं भी सोचू, मैंने क्वेश्चन नहीं ढंग से पढ़ा था। देखो, गीता इज एलिजिबल टू बी सरोगेट बिकॉज शी इज अ क्लोज, देखो मैंने बताया ना कि she is a close relative, she can be eligible for surrogate, but she has been surrogate twice, so that is why this option is correct. But again अगर हमने वैसे देखना हो तो ये ठीक नहीं है, but statement is true। ठीक है, आगे देखते हैं, गीता इज एलिजिबल टू बी surrogate because she is married, ये भी ठीक है, मैरिड है, ठीक है। अगला पॉइंट है, गीता हैज बीन surrogate only twice before and now is, देखो twice before वाला पॉइंट गलत है, she should be only once, so ये पॉइंट आपका फॉल्स है। ठीक है जी, एंड नाउ शी इज नॉट एलिजिबल। गीता इज एलिजिबल टू बी सरोगेट, ठीक है, ये भी ठीक है, 29 की है, शी फॉल्स अंडर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शी कैन बी अ सरोगेट। क्लियर? सो हियर स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट, 3 यही है, ये बाकी और कहीं पे भी नहीं है, तो हियर ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ये भी इजी था, पैसेज में लिखा हुआ था, इजी क्वेश्चन। चलो जी आगे देखते हैं, जोसेफ एंड नीना आर कीन टू हैव अ चाइल्ड विया सरोगेसी। They have been married for 8 years, okay, ठीक है जी, and have been unable to conceive biological due to infertility. जोसेफ कितने का है? 40 का, नीना is 42. They have adopted daughter Maya. अब यहाँ पे adoption का यहाँ पे है, क्योंकि adoption नहीं होनी चाहिए थी. Who is 4 years. Maya has been diagnosed, okay. Now she is having some syndrome, Stryker syndrome, which would cause slow neurological deterioration with chances of death. Devastated, Joseph and Nina decide to opt for surrogacy to become parents to their biological child. Now, are they eligible for surrogacy or not? We have to find this. देखो, यहाँ पे इसका आंसर आएगा yes. क्यों? Because आपके पैसेज में अगेन ये लाइन लिखी हुई थी। ठीक है, अडॉप्ट करा है तो नहीं होता, but if the child is having some problem, some syndrome, some genetical problem, then they can. ठीक है, so here answer will be yes. तो ये कह रहे हैं यस बिकॉज दे हैव नो बायो, देखो ये रीजन गलत है, ये नहीं आएगा क्योंकि बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं है, बट दे हैव अडॉप्टेड डॉटर। क्लियर? नो बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड चाइल्ड, ठीक है, ये तब आता है अगर उसको कोई स्ट्राइकर सिंड्रोम ना होता। ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका यहाँ गलत है। यस बिकॉज दे अडॉप्टेड चाइल्ड हैज बीन डायग्नोज्ड, एग्जैक्टली, दे कैन अडॉप्ट, दे कैन they are eligible for surrogacy because the adopted child is now diagnosed with Stryker and there are chances of death of that child, so that is why. आगे कह रहे हैं yes because the right to procreation parenthood is protected under, देखो ये यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे ये C लगेगा। क्लियर? सो here let us see the answer, C is your right answer। ये भी इजी था आपका, इसमें कुछ टफ नहीं था, एग्जैक्ट लाइन दी हुई थी आपके पैसेज में। क्लियर? आगे देखते हैं हम, हाँ जी, Queen runs a surrogacy clinic. She employs 54 women aged between 25 and 35. We have to check this age criteria. They are all married women with one or more children. Most of them belong to economically disadvantaged backgrounds. They choose to be surrogates because it gives them reliable source of income. Kishore and Noor are intending parents. They have been married for 5 years. Both are aged 35 and do not have children. Kishore have been certified as infertile. So they decide to approach Queen's clinic. They signed a contract with a surrogate. The contract is in writing and is signed in the presence of 2 witnesses. ठीक है जी, contract भी सही बना लिया इन्होंने। As per the contract, Kishore and Noor are required to remunerate the surrogate with 2 lakh per child born as a result of surrogacy and take care of her medical needs, including providing her with medical insurance. A healthy baby girl is born as a result of surrogacy.
Kishore and Noor are overjoyed. They take care of the surrogate medical expenses. However, they do not pay the surrogate the 2 lakh. The surrogate supported by the Queen of wants to take Kishore and Noor to the court to demand they make to the payment. Will she succeed? देखो आपके पैसेज में साफ साफ क्लियर तरीके से एक बात मेंशन थी. क्या वो थी? कि सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस देखने. इट इज नॉट अ कमर्शियल थिंग. यू नो कमर्शियल यू कैन से दिस थिंग इज बैंड इन इंडिया. क्लियर? सो क्या करेगा अब अगर वो कोर्ट में भी जाएगी, शी विल नॉट सक्सीड. क्लियर? सो लेट अस सी द ऑप्शन. यस, बिकॉज किशोर एंड नूर. सो देखो कॉन्ट्रैक्ट बना है बट दिस थिंग इज नॉट legal, it is illegal. Yes, because intending parents and the surrogate meet the eligibility requirements under the SRA. Yes, because surrogate meets the eligibility requirements. No, because SRA allows only altruistic surrogacy, so the contract is not exactly. ये आपका सही है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है बिकॉज इसमें इलीगल कंपोनेंट है. तो वो कोर्ट में जाएंगे भी तो वो चैलेंज ही नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? आपको समझ लगे? ये लाइन देखो कमर्शियल वाली आपके पैसेज में लिखी हुई थी, तभी उन्होंने जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट की भी बात डाली थी. क्लियर? सो कुछ लेयर्स होती हैं या समझनी होती हैं, तो ये इजी था ये क्वेश्चन भी. आई होप ये सब ठीक करके ही आए होंगे. डी इज योर राइट आंसर. आगे चलते हैं जी, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. करण एंड डैनियल आर इन होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप. एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट, marriage is allowed only between heterosexual couples. As a result, Karan and Daniel are not married. However, they wish to have children, decide to go in for surrogacy. When they approach Queen's Clinic, they are informed they do not meet the requirements for intending couple under the SRA. Karan and Daniel wish to challenge the SRA for violating their constitutional right to non-discrimination. The non-discrimination clause for Constitution of India reads, no citizen shall be discriminated on the basis of sex, caste, religion, nationality, place of birth or any other ground. Karan and Daniel argue that the SRA discriminates against them on the basis of sexual orientation because it restricts surrogacy to heterosexual couples only. Now, which of the following arguments would most strongly support their claim in the court? अब हमने जी देखना है कि कौन सा इनका आर्गुमेंट सबसे स्ट्रांग होगा जिससे ये बात प्रूव हो जाए कि ये सही कह रहे हैं. देयर इज द डिस्क्रिमिनेशन. क्लियर? सो लेट अस सी. द नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द सेक्सुअल ओरिएंटेशन. देखो यहाँ पे सेक्सुअल ओरिएंटेशन का ये आप आर्गुमेंट बोलोगे, ठीक है, ये बात यहाँ फिट नहीं. इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट. सो वे कह रहे हैं द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स कुड इंक्लूड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ. See again, sexual orientation towards the other person does not make your argument more strong. ठीक है? So हम पहले बोल रहे हैं कि जी मेंशन ही नहीं करा हुआ, तो this is again not a strong argument. आगे देखते हैं. The non-discrimination clause is not restricted to explicitly mentioned grounds. This can be the right argument. आगे कहते हैं surrogacy is restricted under SRA to married couples and only heterosexual couples can get married. See, this will be very simple argument. But हमने ये देखना है कि which of the following arguments would be most strongly support their claim. क्या claim है इनका? कि Karan and Daniel argue that SRA discriminates against them on the basis of sexual orientation because it restricts surrogacy to heterosexual couples only. So, फिर ये है हमारा non-discrimination clause. No citizen shall be discriminated on the basis of sex, caste, religion, nationality, place of birth or any other ground. ठीक है जी. सो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड ग्राउंड, क्योंकि उनकी तरफ ही सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. क्लियर? देखते हैं इसका आंसर आपके बोर्ड ने भी क्या दिया है, कंसोर्टियम ने, सॉरी क्या था, हाँ जी सी दिया है. तो ये थोड़ा सा आपका थोड़ा टफ था. ये हो सकता है कुछ बच्चे गलत करके आए होंगे क्योंकि इसमें आपका आर्ग्यूमेंट मांगा हुआ था. ठीक है, कईयों को ये ठीक लगा होगा. सो इट डिपेंड्स. तो ये थोड़ा सा आपका ऐसे होते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो उनमें से ये एक ऐसा क्वेश्चन था. ठीक है जी. अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पे, या फिर हम ये अब कवर करेंगे जी अगली वीडियो में. ठीक है जी. अगले 10 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद ये आपकी क्लैट 2023 की सीरीज जो है खत्म हो जाएगी. सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.